हमें कौन सी वस्तु चाहिए ये पहले देख लेते हैं। उसमें जो मेन जो कंटेंट है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका यूज़ हम करेंगे। और चाहिए हमें वाटर डीआयोनाइज्ड, और उसके बाद हमें चाहिए ग्लिसरीन, और उसके बाद हमें चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। एंड हम फ्रेगनेंस के लिए यूज़ करें यूकेलिप्टस ऑयल। प्रोपाइल क्लोराइड को बेस तरीके ले रहे हैं। बाद में हम लेंगे ग्लिसरीन, जो 20 ml 25 ml लेना है। और इसके बाद में हम लेंगे फॉर्मेलिन। ये फॉर्मेलिन है एंटीसेप्टिक कंटेंट रखता है। और इसको हम पुअर करेंगे ये मेन कंटेनर में। बाद में इसको हम सही करेंगे अच्छी तरह से। और डिसइंफेक्टेंट के लिए थोड़ा हम लेंगे न्यूट्रैल्डिहाइड। अच्छी तरह से इसको मिलाना है सही में। और अब हमें अप टू 1000 के लिए डीआयोनाइज्ड वाटर को यूज़ करना है। डीआयोनाइज्ड वाटर को पोर करेंगे अप टू 1000 के लिए। एंड शेक वेल। अब फ्रेगनेंस के लिए हम यूकेलिप्टस ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। Then mix well. Then they add color bromocresol green. Now we fill the bottle.
ये हमारा सैनिटाइज़र तैयार हो गया है। इसको हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ करना है, तो थोड़ा हाथ में लेके इसको पूरी तरह रब करना है, दोनों ओर पूरा कवर हो जाना चाहिए हैंड पार्ट्स को, और इसको 5-10 सेकंड छोड़ दें तो ये पूरा कवर हो जाएगा और हमारा हाथ डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा।